For centuries, the city of Ayodhya remained captive to its own history. Of its once rise as the capital of the idyllic kingdom of Lord Ram, to the destruction of a mosque in 1992. Then a shunned city, while others fought a bitter court battle over its fate. Till the final verdict, it never knew what the future could look like. But history has once again given it a chance to breathe. To feel proud, to rise from the ignominy, to a glorious surge. As Ayodhya is the story of the making of a Mandir. August 2020, Ayodhya was waiting for the Prime Minister. He started off from the national capital of Delhi in his special plane to Uttar Pradesh's capital city, clad in chic traditional dhoti and kurta. Once in Lucknow, the Prime Minister took a chopper to Ram Nagari, Ayodhya, along with the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. In Ram's very own city, Narendra Modi's first stop was the ancient Hanumangadi temple. Sporting a saffron angavastra, he lit a diya and offered prayers. The Prime Minister of India then reached his destination, the Bhumi Puja site for the grand Ram Mandir to rise, and went straight for Ram Lalla idol's darshan. Going on to prostrate himself on the floor with a Sashtang Pranam before the deity. It was time for the main Bhumi Puja rituals amidst chanting of holy mantras. The Prime Minister laid the foundation for the Mandir with silver bricks. He invoked Bhagwan Ram. सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम. And paid tribute to those behind the struggle to find an abode for Ram Lalla, residing in a tent for decades. बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा. टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है. Asserting Ram Rajya Dharam, the Prime Minister stressed on the inclusiveness of Indian culture that bars discrimination. हमें ध्यान रखना है, जब जब मानवता ने राम को माना है, विकास हुआ है. जब जब हम भटके हैं, विनाश के रास्ते खुले हैं. हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है. अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है. This was his first visit to the holy city after nearly 3 decades. In 1991, Narendra Modi, then a BJP worker, was in Ayodhya for the temple movement with L.K. Advani. तब मैंने मुरली मनोहर जी से रहाने गया, मैंने पूछ लिया, सर ये बताइए जो आपके साथ ये हैं इनका नाम क्या है और क्या पद है इनका. तो उन्होंने कहा इनका नाम नरेंद्र मोदी है, ये गुजरात के बीजेपी के नेता हैं.
तो मैंने कहा कि बड़ी खुशी की बात है, लाइए मैं आप लोगों की तस्वीर खींचता हूं, जो कि आप रामलला दरबार में आए हैं। फिर मैंने तस्वीर खींची। उसके बाद मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, दोनों लोग एक ही साथ जो है निकले रामलला के दरबार में। और जब वहां पहुंचे तो मोदी जी कुछ देर ज्यादा रुक गए। तो जब 5 से 10 मिनट हो गया तो मुझे लगा कि आमतौर पे लोग दर्शन करने आते हैं तो वो दर्शन करके आगे चले जाते हैं, तो ये मोदी जी यहाँ रुक के कर क्या रहे हैं। तो मैं फिर पास में चला गया, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे पूछा, सर आप रामलला से कोई वार्ता कर रहे हैं कि कोई आप संकल्प वगैरह ले रहे हैं? बहुत समय लग गया आपको यहाँ दर्शन करते। कहे नहीं, ये बात अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो नहीं बताना चाह रहे हो। तो थोड़ी देर के बाद जब फिर से मेरे सामने आए तो मैंने फिर दोबारा उनसे पूछ लिया, सर ये बताइए मोदी जी कि आप अब दोबारा रामलला का दर्शन करने कब आएंगे? तब उन्होंने कहा कि मैं तभी आऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। In the intermediate decades, Narendra Modi rose in political power corridors as the Gujarat Chief Minister and then as the Prime Minister of India. But even after his ascension to 7 Lok Kalyan, Modi didn't come to Ayodhya. He waited for the final 2019 court verdict to announce his plans for Ayodhya. A deadly pandemic couldn't then stand in the way of the Prime Minister to fulfill his promise. जिसकी तस्वीर आपने खींची वो देश के प्रधानमंत्री बन गए, आप जाइए जरूर मिलिए। तो मेरी इच्छा प्रकट हो गई और उसके बाद में देखने लगा कि उनपे विपक्ष और सारे लोग सवाल करने लगे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो रामलला का दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि अब इनका जो संकल्प है उसका खुलासा मैं ही कर दूं। तो मैंने उस तस्वीरों को फिर वायरल किया और आपके भी चैनल पे भी दिखाया गया। तो मैंने उनके संकल्प खुलासा किया कि उन्होंने संकल्प ले रखा है कि जब राम मंदिर निर्माण होगा तभी आऊंगा। तो उस संकल्प को उन्होंने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की जो है आधारशिला रखी और वो देश दुनिया ने देखा। तो वायदा पूरा जो किया, उन्होंने वायदा पूरा कर लिया। और मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात तो खूब करते हैं, पर अपने गुप्त मन की बात आज तक नहीं बताए कि उन्होंने जो संकल्प लिया था उसे अब पूरा करके दिखाया। The Mandir is rising and so is the city of Ayodhya. Saryu has been witness to it all. The river flowed silently as the clamour to claim the legacy of Ayodhya reached fever pitch. As one group raised hopeful decibels, the other fought for justice, both with equal determination. Unaware of these, beside the Saryu River, children played along as people went about their daily chores. For most in this historical city, all of it was immaterial. हमारी अयोध्या को किसी ने नज़र लगा दिया है, इसलिए जो खुशियाँ थी, जो उमंग थी, जो मिलना जुलना था, जो आना जाना था, सब रुकावटें पैदा हो गई। The wheel of fortune started to turn for Ayodhya visibly as Yogi Adityanath became the Chief Minister of Uttar Pradesh in March 2017. In May, the urban local body of Faizabad Ayodhya was upgraded to a municipal corporation and named Ayodhya Nagar Nigam. Saryu got decked up to celebrate Diwali that year, reminiscent of its epic Ramayana time. Moving away from the rhetoric and political blame game that kept Ayodhya captive to its own history and folklore. As the capital of the mythical kingdom of Ram, to the destruction of an unused mosque on the 6th of December 1992. Sonu Lal came to Ayodhya in the very early stage of the Mandir construction. He was sent by the Sompuras, the architect of the magnificent Ram Mandir, and Sonu Lal never left in the past 3 decades and a half. पर मंदिर बनाने के लिए जगह तो थी नहीं। जगह तो थी, यहाँ जगह ये जगह थी, यही काम चालू किया था हमने तब। हाँ, उसके बाद पत्थर भी हमने वहाँ जन्मभूमि पे डलाए थे 2-3 साल, लेकिन वहाँ बंद हो गया, अग्निकरण कर लिया। तो फिर यही प्रबंधन जी ने जगह दे दी, यहाँ कार्यशाला चालू किया। यहाँ कार्यशाला चालू किया। जब 92 में ढांचा गिरा था तो
आप कहाँ थे? हम यहीं थे, हम कार्यशाला चालू थी हमारी। यहाँ कितनी सरकार आएगी, कितनी सरकारें चलेगी, फिर भी काम हमारा बंद नहीं रहा। पूरी जिंदगी गुजार दी हमने यहाँ। मंदिर की आस में? हाँ, लेकिन अभी मंदिर नहीं बना। आशा है? राम जी ने 14 साल वनवास बैठा, हमने 30 साल बैठा, फिर भी मंदिर नहीं बन पाया। तो आप अभी आस है कि बन जाएगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अब पत्थर इतना हमने बना के रखा, हमको श्रद्धा है। अब 2-3 बार तो मरते मरते बच के फिर आप वापस आ गए। लगता है इस लाइफ टाइम में, इस जिंदगी में देखोगे मंदिर बनते हुए? हमको तो 100% विश्वास है कि हम मंदिर बना के जाएंगे। आप मंदिर बना के जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। Octogenarian Chandrakant Sompura was in his late 40s when he first started to work on the Ram temple in Ayodhya. His family has built temples for generations. They say they were involved with the rebuilding of the Somnath temple in Gujarat as well. Chandrakant Sompura was tasked with designing the temple, and over the past 3 decades, it changed a number of times, and his son took up the mantle in the course of time. पहले जो डिजाइन था जो पापा ने बनाया था, और वो था सिर्फ 2.5 एकड़ की लैंड में, जो डिस्प्यूटेड लैंड थी उसी लैंड के ऊपर उन्होंने, और उस टाइम के हिसाब से, जैसे उस टाइम पे इतना फुटफॉल का हमारे लिए सोचना नहीं था, क्योंकि ये जब बन रहा था वो जैसे कि एक आम मंदिर बन रहा है वो वैसे ही था, क्योंकि उस टाइम पे इतना हाइप नहीं था। तो यही सोचा गया कि जो ओरिजिनल डिजाइन है उसका हम लोग एक्सटेंशन करेंगे, हम पूरी डिजाइन को नहीं बदलेंगे। जो ओरिजिनल डिजाइन पापा ने की थी वही है, उसका हमने एक्सटेंशन किया। उसको जैसे पहले था कि 2 मंडप ही थे, तो 1 मंडप फ्रंट में और 2 मंडप साइड में बढ़ाए गए, पोडियम बड़ा किया गया। वो सारी चीजें करके मेन टेम्पल में उसका फुटफॉल एरिया हम लोगों ने बढ़ा दिया कि जब लाखों की संख्या में लोग आए, तो श्रद्धालु आए, तो उनको सुविधा ठीक रहे। एक सासा था, वहीं पूजा पाठ किया था। परमहंस जी महाराज भी थे, नित्य गोपाल दास जी महाराज भी थे। पूजा पाठ करके इसके ऊपर पहली छेनी हमने चलाई थी। पहली छेनी आपने चलाई थी, और फिर उस पत्थर को यहाँ पर लगाया गया। अभी वो सब पूजा पाठ हो रही है, इसकी सब दर्शन भी करते हैं। एक पत्थर यहाँ रखा है, एक बरगद के नीचे रखा है, तो 2 पत्थर लाए गए थे। उस टाइम हम आया जब पत्थर भी नहीं आया था। उसके बाद 8-10 दिन के बाद एक पत्थर गाड़ी आई जी। उसके बाद कारीगर भी आना चालू हो गया जी। तो कारीगर भी आस्ते आस्ते, हमारे पास 150 आदमी की संख्या थी, तो हमको बहुत अच्छा हो रहा था। They ensured the work for the temple continued in the shadow of a gloomy court battle, away from the political posturing and power struggle. The court verdict of 2019 brought the limelight back to Ayodhya, and the Ram Mandir started to rise finally. Once the foundation stone was laid in August 2020, in January 2021, then President of India Ram Nath Kovind started a donation drive for the Mandir. The work at the construction site, the temple, was going on in full swing, 24 hours, 365 days. Approximately 300 people worked in 2 shifts to meet the construction deadline. A year and a half later, in June 2022, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath came to Ayodhya to lay the foundation stone for the sanctum sanctorum of the temple. Based on ancient Vastu Shastra, construction of the temple over 70 acres of land went on. We check each and every stones when come at site. We clean it through the water, and after cleaning we see the grains and the quality, whether there is a cracks or not, through the geological hammer. This is called a geological hammer. Okay. We just listen to the sound, and listening this sound we can just feel that is there any crack or not in this granite. So each and every blocks are being checked through the this methodology, and we then pass it for the use. For all engineering aspects, that is earthquake and waterproof, all these are considered in this temple.
and we are using this granite stone, which is much stronger for this foundation. The Sarayu Ghat also changed. It got ready to embrace the future. A year later, as the temple started to take its final shape, in October 2023, the pran pratishtha dates were announced, and the Prime Minister of India confirmed that he would be the Yajman for the ceremony. Festivities and rituals were to start from Makar Sankranti that would reach its penultimate finale in the magnificent inaugural ceremony on the 22nd of January. Decades of struggle later, it was time to celebrate and prepare for Ram Lalla's Ghar Wapsi. Lord Ram is the first recorded regal personality that united the Indian subcontinent. Ayodhya is his citadel of power. The prime political unifier possibly couldn't make a return without a game of political power play. As the Ram Mandir Tirth Trust started to distribute invitations to all and every dignitary from all walks of life to bring together a united India in celebration of Lord Ram's return to his divine abode. Opposition of the ruling Saffron Party started to back out one by one, calling it a political gimmick of the lotus. RSS and the BJP have made the 22nd January function a completely political Narendra Modi function. It's become a RSS BJP function. আমি মা কালীকে পুজো দিয়ে হাজরা থেকে সর্বধর্মের মানুষকে নিয়ে মিছিল করে পার্ক সার্কাস ময়দানে গিয়ে আমরা একটা মিটিং করব। মা কালীকে ছুঁয়ে মন্দির মসজিদ গুরুদ্বারা ওখানে অনেক গির্জাও আছে সবকিছুকে ছুঁয়ে सब धर्मेर मानुष के लिए আমরা একটা रैली করব। विपक्ष के लोगों को अपमानित करने के लिए तमाम तरह का प्रचार चलाते हैं। जो निमंत्रण देने का मामला है, निमंत्रण भगवान का कौन कैसे दे सकता है? भगवान तो जिसको बुलाते हैं वो अपने आप स्वयं चला जाता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये पॉलिटिकल प्रोग्राम कर रही है। The four Shankaracharyas refused to join the ceremony but didn't object to it. न जाने का यह कारण नहीं है कि हम राम भक्त नहीं हैं। हमारे गुरुदेव भगवान ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने बड़े बड़े आंदोलन किए और इसके लिए राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए जेल भी गए। चुनार के किले को जेल बना करके उनको बंद किया गया। हम लोग गुरुजी के साथ में थे। तो न जाने का तात्पर्य यह नहीं निकाला जा सकता कि हम मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं या मंदिर का निर्माण नहीं चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं। केवल हम चारों शंकराचार्य एक हैं। जो बहिष्कार कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, उन्हें भी जाना चाहिए। और चारों शंकराचार्य परमात्मा श्री राम की आराधना करने वाले हैं। भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने पंचदेवोपासना का आदेश दिया है। यही उपदेश चारों मठों से और दूसरे जो आचार्य हैं उनकी ओर से उपासना के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं। Where leaders failed, people led. In unity, in devotion, in surrender. मुझे लगता है पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इस बात को सेलिब्रेट कर रहा है कि 22 तारीख को एक बहुत ही आइकॉनिक मूवमेंट हमारा देश देखेगा। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है इतना बड़ा कार्य होना और इस तरह की भक्ति की लहर चलना देश में, ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत बात है। हम सिर्फ प्रेरित हैं हर तरह से। मुझे लगता है पूरे देश का यूथ पूरी तरह प्रेरित है इस वक्त और देश में एक भगवान राम की लहर चली।
it makes me feel so blessed, so special. You know, I'm out of my words. I don't know what to say. I don't know how to express my gratitude to Ram ji and to Modi ji for sharing. I'm so happy that our Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji had tweeted this bhajan and he has loved it. And this bhajan, I have sung it years back, and it's one of the a very, very beautiful bhajan, very simple bhajan, which I think is hummable, which everybody can sing. That's the beauty of this bhajan. Like in the epic, people of all castes and creed and religion came together. Differences put aside, they sang for their Ram. They painted their Ram. They danced for their Ram. India is the only pre-Bronze Age culture that is still alive. And the fact that this has happened through a court case, through a process of law, through debate and evidence gathering, where communities across are celebrating and because of the way it happened, I'm sure you must have read of one of the Muslim litigants, Irfan Saab. He himself wanted to attend and take darshan of Lord Ram's temple, and I think it happened. I think that reaction is because of the way this happened, through a court of law, through evidence gathering. So from a civilizational perspective, it is a very, very important moment as well. It's a second Diwali. Lord Ram is coming back. आज चार धाम आए दिन मड़े राम आए दिन अम्मा सीता नाल आए दिन भरा लक्ष्मण होर भक्त हनुमान आए दिन बजाओ टोल स्वागत बीच मड़े कार राम आए दिन. Ayodhya was getting ready, and the Prime Minister came once again on the last Saturday of 2023 to connect it to the rest of the country with modern technology, with speed, with the host's humble submission. आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है. ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह, ये उमंग बहुत स्वाभाविक है. भारत की मिट्टी के कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं, और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं. Saryu witnessed green electric buses whizzing along the streets of Ayodhya with thousands of tents and accommodations to welcome pilgrims and devotees, and the Mandir was still being made. The calendar turned another page. अमृतत्वाय जीवसे जातां जनिष्यमाणां च श्री राम जय राम 2024 is all set to go down in the history of India as the year for the celebration of the Ram Mandir. Setting the tone from the very first day, the Prime Minister led his people first with a clarion call for cleanliness across the country and in temples, and then right around Makar Sankranti, he went on an 11-day spiritual odyssey, offering prayers at the Sri Kalaram temple along the Godavari in Nashik's Panchavati. Visiting two Ramayan-linked temples in Kerala, in Andhra Pradesh, following the set customs and practices of an ancient Anushtan. 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है
जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं। Narendra Modi slept on the floor on a blanket, consuming only coconut water, performing Gaur Puja, feeding cows every day, performing various forms of dan like Annadan. He became an integral part of the divine choreography of faith. व्रती के तौर पर 11 दिनों तक अनुष्ठान की जो विधि होती है, उस विधि के अनुसार वो पूजन पाठ करेंगे, हवन करेंगे, यजन करेंगे, अर्चन करेंगे, वंदन करेंगे। ये हमारी परंपरा है। हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो परंपरा, उस परंपरा का परिपालन करते हुए मोदी जी 11 दिनों के बाद यहाँ पर उपस्थित होंगे 22 जनवरी को। In Ayodhya, people lit diyas in the evening and in the morning. They did Kalash Yatra. Saryu saw an outpouring of devotees. And then Ram Lalla travelled across the ancient city before arriving at the Mandir, his eyes covered. Crafted by the skilled hands of Mysuru-based sculptor Arun Yogiraj. The yellow cloth, a silent guardian, embodying the innocence of a child, the pride of a king, the divinity of Vishnu. Waiting for the Shubh Muhurat of the Pran Pratishtha on the 22nd of January. While Ram Bhakts walked, cycled, limped and started to come to Ayodhya, the Saryu flowed as witness to the making of the Ram Mandir.